ओके, सो आई थिंक अभी स्टार्ट करना चाहिए. हाँ ठीक है. ओके. तो जस्ट एक क्वेश्चन, सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है या लाइक आर यू ऑल कंफर्टेबल विद हिंदी और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? लाइक मिक्स चलता है या फिर प्रॉब्लम है किसी को? मिक्स. मतलब जस्ट आई एम आस्किंग कि किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है तो. नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया. ठीक है, ओके कूल. तो आई गेस सब लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर से हैं. ओके, तो ऑल राइट, अभी शुरू करते हैं. तो वर्कशॉप 1 आई होप सब लोगों ने अटेंड करी थी, बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड नंबर थ्योरी. तो इस वर्कशॉप से हम क्रिप्टोग्राफी शुरू करेंगे और इजी टेक्निक्स, लाइक ये टेक्निक्स कहीं यूज़ नहीं होंगी. लाइक फॉर एग्जांपल हम मोबाइल कम्युनिकेशन में, वॉइस कम्युनिकेशन में, या फॉर एग्जांपल पीडीएफ इनक्रिप्शन तुम लोगों ने देखा है, तो ऐसी जगहों पे इस टाइप के इनक्रिप्शंस नहीं यूज़ होती हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सबने व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन एक देखा है, राइट? तो ऐसी जगहों पे ये क्लासिकल टेक्निक्स यूज़ नहीं होती. क्लासिकल टेक्निक्स मतलब अराउंड कह सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 तक थी. उसके बाद से एक्चुअल कंप्यूटर्स डेवलप होने लगे, तो हमारी क्लासिकल टेक्निक्स फेल करने लगी उनके आगे. बट स्टिल लाइक क्लासिकल टेक्निक्स इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं तुम्हारी स्लाइड पे, ठीक है. पहला तो क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी आई होप यू ऑल नो, इट इज द मेथड ऑफ like hiding information, secret information. What generally in cryptography we do while encrypting, as you can see a block diagram. You also can see my cursor, right? Cursor on my screen. Just someone Yes, unmute भैया. and okay. हाँ भैया देख रहा हूँ. Okay. So what is the target of cryptography, right? So target of cryptography is to basically convert information into some form which is only readable by some destined users. Okay, we don't want anyone in between to read your messages. For example, best way to describe is WhatsApp end-to-end encryption. You must have always used WhatsApp, and it must have shown you many times your messages are end-to-end encrypted. So what does that mean basically is that uh, you have a plain text, right? The message you are sending can be termed as plain text because it has the information which is readable by anyone. Okay, so that is termed as the plain text. Okay, so what happens is that you and your friend have a shared secret key. Shared secret is the secret which is only known to both of you or very limited people. For example, in group communications, you can say. Okay, so this shared secret is known to very few people, and once encrypted, like whenever you click on the send button, the messages are first encrypted, then only they are transmitted over the network. And when the messages are encrypted, like they are not in a readable form, we will see later on how the messages are encrypted. There are various methods, but just for now, let's say there is some encryption method, we don't know whatever it is converting your plain text into ciphertext. Ciphertext is the one basically uh, which is not readable by anyone in between. It can be, it can be looking very much jumbled and no one can derive the original message from it. Okay, and once it reaches the receiver also knows that shared secret, so he can easily convert the ciphertext again into the plain text. Okay, so that's how basic encryption scheme works. This is the target of basic any encryption scheme, so that we can securely transmit messages. Okay, um, here are some terminologies, like you can just later on go through it. I am just explaining you in brief. uh, the key, I have also used the key before. This key, many of you might have already guessed, is something like, you have a password on your computer. That is a sort of a key. So in the similar sense, this key
is to be kept secret, and no one else should know your secret, because once they have your key, they can easily encrypt and decrypt the messages. So one of the targets in any cryptography scheme is to keep the key secret, because once the key gets leaked, there is no way you can secure your system. Okay, you need to renew the key, you need to regenerate a new key and then distribute it to the other users. Okay. Cryptanalysis, the term is just an mathematical analysis of any cryptography scheme. We will see later on a few cryptanalysis schemes we will discuss. Okay. um, these four are the primary goals of any crypto system. Okay, crypto system is basically a collection of encryption decryption algorithms. Okay. So what we do in crypto systems, first of all, you must have this this thing, confidentiality. This thing I have already told you, that no one else can view your messages, right? So uh, in this way, no one can know that you are sending whatever message you are sending. But only confidentiality does not mean any, is not, only confidentiality is of no use. For example, here is some uh, dummies encryption scheme where we are just showing a communication. This guy sends a message, encrypts it while sending, and some man in the middle. This type of attack is known as man in the middle. A man or a computer sits in between of a network and tampers with your message. Okay, so what happens is that this man might not know what is the key of your message. Okay, this man might not understand whatever message you are sending, but what he can do is that he can tamper the message. For example, uh, you send some message, there is a encrypted text in between. This man changes that encrypted text, right? But he don't know, like, no one knows what kind of changes is he making, because no one can read it in between, right? But when the receiver receives the message, if there is no integrity check, integrity means the message has not been tempered. Okay, if there is no such check, the guy will, whenever he will decrypt the message, will get a different thing. Whatever was sent will be totally different. So that again forces us to make an integrity scheme also, so that we can see whether the message has been tempered by some man in the middle or not. Okay. Authenticity. Okay, so for example, this man sends some message directly. For example, whatever this first guy is sending some message, this man in the middle is just ignoring all the messages incoming, and it is sending its own messages to the end user. So how can this second user know that it was this man in the middle or his friend who was sending him the message? So that leads us to have another uh, security in our scheme, which is known as authenticity, so that we can ensure that the sender is identified. We can identify who is sending the message. It is again very much required in any crypto system. And fourth one is key exchange. uh, I told you before that there is a shared secret, right? But just a second. Okay, so you can see the full screen, right? Right now. Just someone unmute and can say nothing. Hello. You can see my screen, right? हाँ भैया देख Yes, रहे हैं। भैया. Okay, cool. तो ठीक है. Okay, so here I have told you that there is a shared secret key. Okay, so you are sending some messages, you are encrypting it, then the cipher text is being transmitted.
somehow over the network, then it is being decrypted at the receiver and plain text is derived from it. Okay, but the problem here, you see, how can we have a shared secret key? For example, there are many methods you can have a shared secret. For example, uh, your friend is visiting you and he will directly give you a key in your hand. Okay, so you can just go and type that key in your computer and you will be ready to go. Like, you can go and visit the shared. This can be one of the methods of transaction for sharing the secret key, but the problem is that keys are generally renewed very frequently. For example, using a single key, we won't be decrypting a lot of messages, because after a certain number of usage, if we still keep on continuing the key, what happens is that the key might get compromised, because after repeated encryptions, the attacker may know the pattern, may start identifying the pattern, so he can compromise the keys. So for that reason, we generally do renew keys after some time. So sharing a key is also a big challenge, uh, because without a key we cannot encrypt the messages, right? And how can we then share the secret key over the same message without encrypting? So there are certain strategies for key sharing algorithms. We won't be discussing it in this presentation. Future workshops will be discussing the key exchange algorithms. So, all right. These crypto system services and goals you have seen. Yatharth, you want to take on from there? नहीं तू कंटिन्यू कर. Okay, cool. Okay, so here's a network security model. Okay, it is basically the same thing which I have explained you before, uh, but it is a bit more detailed. There's a sender who has a message. He's encrypting the message with an encryption key, and the message is now encrypted form. An attacker cannot attack. Okay, so by this secure message, what I mean is that all of the first three goals are achieved. The message, we can ensure the confidentiality, integrity, and authenticity. Okay, uh, not all the things we will be discussing in this presentation. We will be mainly focusing on confidentiality here and only the classical methods, so that you get to introduce like how basically encryption scheme works. Okay, and then later on in future workshops we will be covering integrity, authenticity, and key exchange methods also. Okay, so here is the thing: we have a secret key, message is encrypted. Okay, and attacker cannot tamper with your message and also cannot read your messages. Okay, the message is received by the receiver, and he decrypts the message and derives the message. Okay, so here you can see two things also. Here I have written encryption key, here I have written decryption key. It may happen in some encryption key, some crypto systems, that encryption key and decryption key are not same. Okay, these are known as asymmetric. We will go on that later. Okay, so here one important block you are seeing, trusted third party. Okay, trusted third party is required in every communication for the key management. Okay, trusted third party can be anything. Okay, um, uh, let me just give you an example. Uh, just hold on. Okay, so you can see my whole screen, right? हाँ यश. हाँ भैया. Okay, okay. So you all must have seen this lock. Uh, like do anyone knows like what does this lock mean actually? Secure connection. Secure connection, but how is Trusted. it secure? Okay, so
here is the certificate information for google.com for all the for all the domains of Google. Okay, asterisk.google.com. like Google से पहले कुछ भी आ सकते हैं, docs से जैसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है. तो this is a certificate of Google. Okay, so uh, here you are seeing issued by. Okay, this is a certification authority. Okay, this is the okay. Actually, Google is itself a registered certification authority. So what happens is that these certificates are basically uh, here you can see these are actually this is actually a chain of certificates. Okay, so what this this is known as wildcard. Okay, asterisk. Okay, this wildcard certificate was issued by this GTSCA, Google Trusted Certification Authority. Okay, and which was again given by some root CA. Okay, so what happens is that these are actually we can say trusted third parties. Okay, in a way we can say, because what happens is that our computer is having these certificate. This GTS CA1C3 is stored on each one of our computers. Okay, this is stored by the manufacturer and the in the operating system itself. Okay, so what happens is that when we are already having this certificate, so whenever we are looking at any certificate which was signed by the Google certification authority, that is asterisk.google.com was signed by this. Okay, so whenever we receive communication from the google.com, we can be ensured that okay, ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी केवल वेरीफाइड लोगों को ही साइंड सर्टिफिकेट इशू करेगी. ओके, लाइक अगर मैं बोलूँ कि इस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से मेरे को अपना सर्टिफिकेट साइन कराना है, अपना कोई भी रैंडम, मैं साइन नहीं करवा सकता हूँ, बिकॉज वो केवल वेरीफाइड लोगों को ही साइन करेंगे. ओके, सो इन दैट वे आई कैन बी इंश्योर कि मेरा जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑथेंटिक है. ओके, ऑल राइट. इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं भैया. ओके ओके, मतलब ये चीज़ें अभी थोड़ा बाद में और क्लियर होंगी. लाइक अभी मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है. ओके, परफेक्ट. तो ये हो गया टर्मिनोलॉजीज. और तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स है. लाइक हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो की स्पेस, जैसे कि key space is just a set of all possible keys in every algorithm. Okay, it is just a term used for that. Crypt analysis, I think I told about it before. A mathematical attack. Okay, brute force, another one is a brute force attack. Okay, brute force attack simply means that you pick every key in the key space and try it. Whether it works or not, you will choose the another key. Okay, so we can like estimate that if we have a very large key space, brute force attacks becomes infeasible. Okay, and on an average, brute force attack requires you to iterate through half of every key space. Then only you can successfully estimate that brute force. Like that is an average case. Okay, um, cryptanalysis is actually something more, you can say, smarter attack. Okay, for example, in brute force you are trying out every key space. Okay, maybe after looking at some secret text I think okay, so आधी कीज तो ये यूज ही नहीं हो सकती, तो मैं केवल यही आधी कीज को ट्राई करूंगा. ओके, सो दैट इज वी काइंड ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस कि मैंने साइफर टेक्स्ट को देख करके बताया कि कौन कौन सी कीज में ट्राई करने वाला हूँ. ओके, सो वही सब है. एडवर्सरी जस्ट एनी मेलिशियस यूनिट, कुछ भी हो सकता है. मतलब एडवर्सरी कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, तुम्हारा कंप्यूटर किसी और सिस्टम पे अटैक कर रहा है तो तुम्हारे कंप्यूटर को हम एडवर्सरी टर्म कर सकते हैं. ओके, सो एडवर्सरी कोई सी भी मेलिशियस चीज जो कि नेटवर्क पे या किसी क्रिप्टो सिस्टम्स पे अटैक कर रही है. ओके, इंटरसेप्टर, ईव्सड्रॉपर, कोई भी जो बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल वो this in this picture, this guy can be called as an eavesdropper because ये तुम्हारे बीच में encrypted communication को intercept करने की कोशिश कर रहा है. ओके,
हाँ, तो encodings and encryption. Okay, तो what happens is that sometimes people actually confuse between encoding and encryption. Anyone knows base 64 here? नहीं पता. Okay, all right. मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये विकीपीडिया का लिंक यहाँ पे मैंने एम्बेड कर रखा है. और भी चीज़ों के रेफरेंसेस हैं. कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो. ओके, तो बेसिकली एनकोडिंग में हम डेटा के हम फॉर्म्स चेंज करते हैं. ओके, उसको दूसरे फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है. बहुत कॉमन यूज़ होने वाली हेक्साडेसिमल एनकोडिंग और बेस 64 है. हेक्साडेसिमल में हम हर बाइट को 2 कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये सब लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये सब तुम खुद से रीड कर ही सकते हो. गूगल पे तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा. ओके, Saksham, you want to take from here? Yes. So now we'll start on the types of encryption algorithms that are there. So there are basically two types of encryption algorithms. There's the symmetric key algorithms and the asymmetric key algorithms. Hash algorithms, they're not actually, they do convert a plain text into a different type of ciphertext, but I personally don't consider them as an encryption algorithm. They are more like, say, if you have a password and you enter your password into your PC doesn't actually store your password. It stores your password's hash and checks it against that hash value. So that's the concept of a hash. They are non-reversible, as we'll see maybe in a later workshop. Next slide. So this is a symmetric key system. The major property of a symmetric key system is that there is only one key involved in both the encryption and the decryption process, which means that if you have your key, you can आप अपना message encrypt भी कर सकते हो और उसी key से अपना message decrypt भी कर सकते हो, and it will be an easy operation. It won't be very difficult. So, and the major examples of this system are ECB and the AES encryption system. So if you have the key, you can as well as encrypt and decrypt, and so it's very imperative that the key is safely hidden. And if you don't have the key, in a perfect system, the only way without a key would be a brute force attack, and that would depend on the size of the key space, as Yashvaya previously explained. Next slide. And now we come to the really interesting part. This is called asymmetric key cryptography. It's also known as a public key cryptography and is a process that uses a pair of related keys, a public key and a private key, to encrypt and decrypt a message and protect it from unauthorized access or use. So in contrast to your symmetric key crypto system, this actually uses a public key and a private key. And a public key is the key which you will use to encrypt your plain text. So आपने अपना plain text encrypt किया using the public key and you got your ciphertext. Now you will think, why can't you just use your public key to decrypt it back? You can't do that because ये asymmetric key crypto systems ऐसे design होते हैं. They are not, you cannot go two ways with the same key. You have to use a different key for encryption and decryption, because like the most important example of this is RSA. So say if you have your encryption key, you encrypt your message, the reverse process will be so difficult, your computer will not be able to solve it unless it has some special information. And guess what? That special information is called your private key. So this public key, it's available on public domain. So मैसेज कोई भी encrypt कर सकता है, but decrypt सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उसकी secret key है. So this accomplishes two functions. This accomplishes authentication and encryption. Authentication means that you can verify that the holder of the paired private key only sent the message and there was no tampering in between. And encryption, as I said before, only the one with the private key can decrypt.
Next slide. Hello, bhaiya, next slide. So this is a diagram of the asymmetric key cryptography system, like I explained. Yes. So as you can see, anyone can encrypt the information, but decryption is only a one-way process. That special information that you need. This forms the basis for a lot of crypto systems actually. There's the RSA crypto system, there's the elliptical curve crypto system, and the this was a very big hallmark in the cryptographic community actually. This started when the Diffie-Hellman crypto system was first formulated. We will probably study that in a future workshop. Next slide. So block ciphers versus stream ciphers. So block ciphers, as the name might suggest, it's not what you do in a block cipher is that you have your plain text, you divide it into blocks of specified lengths, and each length, it's usually a 16 byte block or the 8 byte block, could be a 32 byte block, depends on the system. And you encrypt each block and then you concatenate all those encrypted blocks and give it out as the ciphertext. And but there's always the issue that maybe, say if you're using a 16 block system and you have only say 49 character length plain text, so you'll get 3 blocks and 1 character. So there's also a padding scheme that is used. So the one last remainder character that you have, you pad 15 characters with it and then you encrypt it. So that solves the problem of the block cipher. You always encrypt blocks and then you apply on those encrypted blocks, you apply operations and then return the ciphertext. And a stream cipher, on the contrary, it works on each character instead of each block, or might I say it works on each bit. So say if you have a message, you'll work through each character of it. Each character you'll turn it into bits and you'll work through each bit separately to get your final message. So block ciphers are the advanced encryption system. This is the most prominent form of block cipher out there. DES is also a type of AES. AES contains ECB, CBC, OFB, and etc. Stream ciphers, RC4 and LFSR. LFSR stands for Linear Feedback Shift Register. And RC4 is a sort of outdated cipher now. It's not used a lot. Next slide, please. So as I said in the stream cipher, the XOR operation is very important with regards to what we are studying right now. It's called the exclusive OR operation, and this is a logical operation and a bitwise operation. It's applied on bits, and you can always apply it on integers by converting them into bits and then applying it on each bit separately. That's how it works within the computer, right? It is perfectly balanced, and it is, say, the computer's version of addition, because you can see from the table that's given, zeros or if the 2 bits are equal, it will return you a 0. If the 2 bits are not equal, it will return you a 1. There are certain very special properties that are associated with XOR actually. If A XOR B gives you C, then B XOR C will give you A, and A XOR C will give you B. There, it's also commutative, it's associative, and it's a reversible operation. So because if you XOR the same quantity to a number 2 times, you'll get the same number back. And the operation for XOR in Python is the exponential operator. You can try if you get the time. Next slide. So this is the one-time pad. One-time pad is probably the most unbreakable cipher out there, in theory at least. So what you do in the one-time pad is you generate a random key, which is usually, say, a 16 byte length key. 16 length key, which is made up of bytes. A byte is a quantity between a byte, I'm sure you're aware, it's 8 bits. So, and you take your 16 byte key, for example, and you XOR it with your plain text.
and as long as you do not know your key, you cannot get your cipher, you cannot get your plain text back, as I specified. Because if you know the key, there's you can obviously XOR it to the ciphertext again and get your original text back. Why is it unbreakable? Its unbreakability totally relies upon the fact that these keys have to be random, these have to be unique, and these should not be repeated at all, and there should be no relationship between them at all. Because if there is, you will always be able to somehow maybe guess what the character was before this key, or what the character will be in the next key. And if you can do that, if there's even a certain chance of predictability that arrives, your ciphertext is screwed basically. As this suggests, this is a one-time key and it should never be used again, because if you do, you can just predict what your ciphertext was as a plain text. The key is made up of random symbols. It's just a value an array of 16 values, and each value lies between 0 and 255. Next slide. So is one-time pad our answer to the perfect secrecy question? Because the question of privacy is very controversial today. Why is it unbreakable? Because the key is as long as the given message. You can make your random key as long as you want. If it is truly random, this key is truly random and specifically auto-generated, is a very crucial condition that should be satisfied. And if it's not, this always gives rise to vulnerabilities. Each key should be used once and destroyed by both the sender and the receiver. Leave no clues behind. And then there's this thing, your ciphertext has no meaning if there's no way to decrypt it, right? So you have to somehow make sure that both the random key that you had has to be available to the recipient and to the sender available at the same time, so that they can actually decrypt your message. An example is given here. You can check for yourself. So why don't we just use the one-time pad everywhere? Because this question of randomness is a very special one in computer science. Say you will only use algorithms to generate a random key, right? And if it's an algorithm you're using, you can say that to a certain extent there will be some sort of determinism behind it. So the way to do it, say the Python function you might be aware, os.urandom, which we use to generate a 16 byte, or say any arbitrary byte length key we can generate with it. They are pseudo random, like they use algorithms, they are statistically determinable, like they follow some statistical properties which are satisfied, and if studied properly, they might be exploited to some extent or the other. Secure generation and exchange of the one-time pad values, which must be at least as long as the message. The key point here is that if we are able to securely exchange keys as long as the message, then there is no point using one-time pad, as you can already send a message. So it's the same thing, like you have to be able to use keys at both the location at the same time, and other than that, there is no meaning behind the system itself. Bhaiya, you can take over the next slide. Yeah. Is my screen visible? यस भैया। ठीक है, तो हम यहाँ से अब क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स जो है, जो मेन चीज़ें थी क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स, वो सब चालू कर देते हैं। तो these are the different kind of classical encryption techniques. बेसिकली दो बाइफर्केशन है, कि एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स है और एक ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स है। हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, और बाकी भी तुम अगर गूगल सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, काफ़ी इजी पढ़ सकते हो। तो द फर्स्ट इज सीजर साइफर। ये मेथड इज नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर तुम सब लोगों ने 12th में इनका नाम सुना होगा। तो दिस टेक्निक वाज यूज्ड बाय हिम
and each letter in the plain text is replaced by some letter of fixed number of position. इसको समझने के लिए जैसे ऐसा है कि A को हमने रिप्लेस करा X से, B को Y से, C को Z से, एक पर्टिकुलर लेंथ है जिससे शिफ्ट करा गया है हर एक लेटर को. So each letter in the plain text is replaced by a letter or some fixed number of position down the alphabets. So इसमें हर एक लेटर के लिए एक मैपिंग बन गई है जो कि एक पर्टिकुलर लेंथ से आगे बढ़ी हुई है, शिफ्टेड बाय पोजीशन x. सो इसका यूज करके जैसे ये क्लियर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, सीजर लेड द रोमन एम्पायर इन द गैलिक वॉर. सो इसको हम ऐसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैपिंग. तो इनक्रिप्शन इक्वेशन अगर हम लिखें तो इनक्रिप्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस n मॉड 26 वेयर n इज द शिफ्ट. सो यहाँ पर जैसे हम शिफ्ट देखें तो a को x से शिफ्ट करा है तो -2 कर दिया है, तो बेसिकली x की वैल्यू, शिफ्ट की वैल्यू -2 हो गई है, क्योंकि 2 से हर नहीं, -2 नहीं, -3 हो गई है, सॉरी. तो 3 की वैल्यू से सारे अल्फाबेट्स शिफ्ट हो गए. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इनक्रिप्शन. हमने n की वैल्यू -3 यहाँ पर रख दी तो मॉड 26 लेने पर सारी वैल्यूज अपन को मिल जाएगी. एक मिनट. तो डिक्रिप्शन के लिए भी सेम ही है कि अब हमें, एक मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ है. तो असल में अब हमको उल्टा करना है, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए. तो डिक्रिप्शन में अब जहाँ पर x है वहाँ पर a रख देंगे तो वापस से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट से क्लियर टेक्स्ट आ जाएगा. लेकिन इसमें यह है कि की पता होना चाहिए. सो अगर की जैसे यहाँ पर -3 है तो -3 जो इनक्रिप्ट कर रहा है, जो डिक्रिप्ट कर रहा है, दोनों को पता होगा तो वो अपने मैसेज को आसानी से समझ सकते हैं. So this is the equation for encryption, and below is the Python implementation of Caesar Cipher for encryption. So if the plain text is like crypto, Caesar Cipher is cool. So you can go through this implementation. It's basically this only, the equation written here. So similar for decryption. Decryption uses this equation. So below here is the implementation. One thing is Caesar Cipher. One thing in Caesar Cipher is that you have to look for the plain text. Like there are multiple plain text possible. So you have to see which one makes sense. Like here are if we use the key as 0, 1, 2, and up to 25. Different types of plain text are obtained, but only one meaningful plain text is present here. Like here it is written that crypto Caesar cipher is very easy to break. So this is one of the point. So cryptanalysis of Caesar cipher. So key space is 0 to 25. Like the shift may be 0, maybe 1, and may vary up to 25. After that, it will be repeating the other keys from 0 onwards. So this is the key space. As Yash was talking in the earlier part of the workshop, this is what he means about meant about key space. Therefore, since the key space is very small, only 26 different values, so it is vulnerable to brute force attack. As the key space is very small, brute force attack will be easy to be performed. Another point is that we need to recognize when we have the plain text. Like here we have seen we have different plain text, but we have to recognize that which plain text makes sense. So this is one of the point. There is no way to determine whether the key is correct or not. So there will be 26 different possible decryptions. So you have seen that there are 26 different possible decryption, but only way to get the plain text is by seeing which of the plain text makes sense.
Also, we may say that just by looking at the ciphertext, no one will be able to decipher, but can always tamper with the ciphertext, which will lead to wrong message being read by the receiver. So it may be some case like using some kind of key, a plain text is obtained, and it may also makes sense. So, but it is not the actual message. So there may be two different decrypted message that can be obtained, but all of them are correct plain text. It is not always correct. So this is the cryptanalysis of Caesar cipher. The next we will discuss is monoalphabetic cipher. So monoalphabetic cipher or simple substitution cipher is a substitution cipher which takes each letter as plain text and is replaced by another letter of the alphabet. Okay. तो आसान शब्दों में अगर अपन शब्दों में समझे तो हर एक जैसे सीजर साइफर में every letter was shifted by some constant amount. But in monoalphabetic cipher, it is not a case like that. A is mapped to M and B is mapped to U. There is no particular constant shift. Each letter can be mapped to any of the 26 other characters. Like A can be mapped to any letter from the 26 characters, 26 alphabet characters, and B also have all the 26 options. So सीजर साइफर इज अ स्पेशल केस ऑफ मोनोअल्फाबेटिक साइफर. यहाँ पर देख सकते हैं कि मोनोअल्फाबेटिक्स में अगर अपन स्पेशल केस देखें तो वो एक तरह का सीजर साइफर बन जाएगा. मोनोअल्फाबेटिक जो है वो उसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं हर एक अल्फ़ाबेट के लिए. इन द एग्जाम्पल की ए लेटर इन द प्लेन टेक्स्ट इज एनकोडेड टू एम, एज यू कैन सी. This type of this type of cipher is a form of symmetric encryption, as the same key can be used for both encryption and decryption. इसका मतलब ये है कि जैसे A M से मैप्ड है तो हम एक तरीके से जो की जो है वो 26 लेंथ का 26 लेंथ की होगी जिसमें M U A ऐसे करके लिखा है और M जो है वो A से मैप हो रहा है. तो हम इस की का यूज करके इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं. जब हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा तो हम एम से ए भी वापस से डिराइव कर सकते हैं. एक मिनट. तो अभी एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा. तो let this be the plain text. We have the secret information. They will attack tomorrow. So this is the our encryption scheme. Like A will be mapped to E, B will be mapped to S, C will be mapped to Z, and all the 26 alphabets will be mapped to some particular other alphabets. So using this scheme, we can encrypt this plain text and obtain this cipher text. Like W is replaced with N. So here you can see W was mapped to N. So W is replaced with N. Similarly, E is mapped to F. So E is mapped to F. So we can replace E with F. Like this, this monoalphabetic cipher encryption is done. So if you talk about security in monoalphabetic cipher, we have total of 26 factorial keys. This is obtained like A can be mapped to 26 characters. B can be also mapped to all the 26 characters. So we have 26 choices for each of the characters. So 26, but like A can be mapped to 26 characters. B can be mapped to 25 characters, as A has already taken one character. So this 26 factorial term is obtained from that concept. So with so many key, it is secured against brute force attack. So as the key space is very large, so it is not vulnerable to brute force attacks. No one can decrypt it using brute force attack, but cryptanalytic attacks are always possible in this encryption because of one thing.
Like if we analyze this table represents the relative frequency of characters in English language. Like the relative frequency of E is very high. In English language, the usage of letter E is very high as senior. So human language are not random. There is some pattern and some statistics going on behind the language. So letters are not equally frequently used. In English, E is by far the most common letters, followed by T, R, N, I, O, A, S. So this order is obtained from this table only. And we can also have some common bigrams. Bigrams are the pair of two letters. So T and H are most common bigrams. Then H and E. So T in English language, TH occur most frequently together. And there are also trigrams. That is most common pair of three letters. So the and THA, E and T. So these are known as trigrams, and these are its order. So TH is most frequent, THE is most frequent trigram, and E is most commonly used letter. So using this, we can decrypt the monoalphabetic cipher. So अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एक साइफर टेक्स्ट है, दिख ही रहा होगा, काफी रैंडम है. So पहले हम इस पे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे. Frequency analysis means that we count the frequency of each letter in this cipher text. So on doing the frequency analysis, we can obtain W occurs 20 times, C occurs 11, F occurs 11, G occurs 11 times. So ऐसा हो सकता है कि W जो है वो E से मैप हो, W may be mapped to E. So if we replace W by E, so just is what we obtained. The red color, the alphabets represent that the W, that letter is replaced by some other letter. So W को E से replace कर दिया, तो काफी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी. जैसे ये अपन सोच सकते हैं कि this may be the, and I am saying this because like if the most common trigram, इधर दो तीन जगह एक्स बी ई आ रहा है. जैसे एक तो ये है, एक यहाँ पर नीचे है, एक यहाँ है, तो तीन जगहों पर एक्स बी हमको दिख गया. तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि एक्स बी मे बी मैप टू टी एच ई. सो एक्स इज मैप टू टी एंड बी मे बी मैप टू एच. सो रिप्लेसिंग दीज ऑल्सो वी कैन हैव we have got this far in decrypting that cipher text. Like we have obtained the and few other things. Like if we focus on this word T and S, where T is what we have obtained, and we have to find the mapping of S. So this may be true. Like we can assume that like this will be mapped to 2, so S will be mapped to O, and if we map S with O, we can use it here. So this will make others. So others, if we make this as others, so G will be mapped to R, and F will be mapped to S. So using this type of cryptanalytic attack, we can decrypt this message. Like after substituting the previous thing, more words are becoming clear. Like we can certainly say that this will be secret. So P will be mapped to C, and C will be mapped to I, as this will be is only. Using this type of attack, we can decrypt the monoalphabetic cipher, and the final message that we obtained will be like this. For more understanding, here is a link that that has detail of the monoalphabetic cipher and a few examples also. You can visit this.
So from here, Yash will be taking. Yash. Yes, you can turn off your presentation. Thanks. Okay, so uh, we were at the Vignette Cipher. Okay, so we all have seen some of the old ciphers. All right. Now, can just anyone unmute and tell me what was the problem with one-time pad? Like, you got no one. What is one-time pad? What was the problem with one-time pad? Okay, so nobody is paying attention. All right. So the problem. बता दो किसी को तो पता होगा कि वन टाइम पैड में बताया था सक्षम ने कि क्या प्रॉब्लम थी. Even though it's random, there's still some algorithm used to generate random, so it can be found out. No, actually, the that problem is actually with multi-time pad attack. There are two things: one-time pad and multi-time pad. Okay, in one-time pad, what we do is actually we use the key only once. Okay, in multi-time pad, what we can say that same key is used multiple times. Multi-time pad is totally insecure. Why? Because in multi-time pad, the attacker can get a lot more information. Like from one time pad, even a single bit of information is not revealed. Okay, but in multi-time pad attack, a lot of information can be revealed. Okay. um, Actually, there is a course I have also listed at the end of slide. I have written its name on Coursera. You can try out that course. In that course, there is a very good assignment on multi-time pad attack. All right. So you guys can try solving that one. That will give you, a bit insight into why multi-time pad attack is unsafe. Okay. So here I will be discussing Vignette Cipher. Okay. Uh, so Vignette Cipher is basically looks more like multi-pad at one-time pad attack, one-time pad. But here, but in sorry, one-time pad, there was a thing that the key has to be as long as the message. Okay. But in Vignette Cipher, what we do is that instead of making that key as long as the message, we generally have a small key and repeat it multiple times. Okay. So you can see that here is an example. The word deceptive has been repeated multiple times, and here is your cipher. Here is your plain text, and the cipher text is basically the one-time pad of the plain text and the repeated key. Okay. So how does this work? Is basic. You all must be familiar with the ASCII values. Uh, so we generally operated upon the ASCII values. What here we are using is that you can just simply say all the alphabets are mapped to their numeric values. We are indexing all the alphabets. For example, A is given number 0, B is given number 1, and so on. Z is given the number 25. So in that way, we can map easily all the alphabets, and then we can apply such arithmetic operations using modular arithmetic to encrypt the Vignette cipher. Okay. So here are the thing. Yeah, for the cryptanalysis, I would like you guys to read it on your own because it requires it requires a lot of time. So you can read from here Vignette about Vignette cipher or from some source. What I will be doing is demonstrating code in Vignette cipher. Okay, so just to make sure that you guys will also be familiar with coding in Python, various ciphers. Okay, so let's say we have some text, the same text. Let's say I'm encrypting. Okay, so let me just make a variable called plain text. Okay, all smalls. So what I will be doing is that I will be encrypting this cipher. Okay,
let's say I have some key. Okay, so this one is the key which I will be using to encrypt the plain text. Okay, so what you will be doing instead in one-time pad. Okay, so in one-time pad, um let me just write one key for that one also. Okay, so in one-time pad you will be having a key which is of the same length as the plain text. Okay, I am just typing random characters here, only alphabets. Okay, so what is the भैया difference between पूरी one स्क्रीन time? नहीं दिख रही है आपकी? पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ वेट, VS कोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया, जो आप टाइप कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। ओके सर, सॉरी, मैं देखता हूँ। अभी दिख रही है VS कोड की स्क्रीन? हाँ अब दिख हाँ रही भैया है। अभी तो दिख ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ तो, हाँ पता नहीं था। ओके, हाँ तो, हाँ ओके। तो ये अभी यहाँ पे देखोगे तो प्लेन टेक्स्ट और वन टाइम पैड, ये दोनों की लेंथ इक्वल है। ओके, सो एक्चुअली वन टाइम पैड में यही डिफिकल्टी कि हमें जब किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, हमें उसको वन टाइम पैड की हमारी की भी भेजनी है, राइट? अगर हम उसको की भेज पा रहे, उसके बाद हम उसको प्लेन टेक्स्ट भेजेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये की एक ही बार यूज़ हो सकती है, ठीक है? तो की भेजने से अच्छा उसको प्लेन टेक्स्ट भेज दो, जबकि तुम की भेज पा रहे हो और वो भी सेम लेंथ की है प्लेन टेक्स्ट की, तो तुम उसको डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट ही भेज दो, की क्यों भेजनी है, ठीक है? तो दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम विद वन टाइम पैड कि तुम्हारी की तो सिक्योर है बट वो इतनी लंबी है कि तुम उसको सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी एन्क्रिप्शन स्कीम्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल योर की विल बी ऑफ मे बी ओनली 16 बाइट्स यानी 128 बिट्स, ओके, और तुम्हारा मैसेज होगा गीगाबाइट्स में। तो वहाँ पे कंपैरेटिवली की का साइज बहुत छोटा है, ओके, और तुम उतनी छोटी कीज़ को तुम शेयर कर सकते हो, तुम मतलब और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव एल्गोरिदम्स लगा करके उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो, राइट? बट यहाँ इस केस में प्रॉब्लम है कि uh, तुम्हारा मैसेज मान लिया मेगाबाइट्स में, तो तुम्हारी की भी मेगाबाइट्स में, विच इज़ नॉट फीजिबल। ओके, तो पहले हम वन टाइम पैड के साथ देखते हैं कैसे एनक्रिप्ट करेंगे, राइट? तो एक सिंपल एक मैपिंग बनाते हैं। ओके, मैपिंग कैसे? हम कैरेक्टर्स को उनके नंबर से मैप करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे ASCII वैल्यू से भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे दिखाना चाह रहा हूँ। ये लिखा हुआ टाइप किया हुआ है कि किसी के पास ऐसा कुछ? भाई भी कुछ ऐसा टाइप किया हुआ रखा है क्या अभी? नहीं देखता हूँ, रुक जा, अभी तो ऐसा नहीं है कुछ तो वैसे। नहीं है तो ओके, मैं कर लेता हूँ। एक सेकेंड जस्ट मैं। ओके, पाइथन के साथ लाइक सब फेमिलियर है ना? जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ ये समझ आ रहा है ना किसी को मैं क्या कर रहा हूँ? डिक्शनरी है ना भैया? हाँ हाँ, डिक्शनरी, राइट। यस भैया आ रहा है। ओके, यस भैया आ रहा है, आ रहा है। मतलब जिसको नहीं आ रहा वो बता दो, मतलब। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने अभी मैं टाइप करना चाह रहा था एक डिक्शनरी, ये वही डिक्शनरी यहाँ पे एक जनरेट करेगा। ओके, ठीक है, तो वही सेम डिक्शनरी मैंने यहाँ पे जनरेट करी है। ओके, ये कोड को बाद में समझ सकते हो जिसको नहीं समझ आ रहा, लाइक कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 0 से 25 तक एक मैपिंग क्रिएट करी है। ओके, तो अब मैं इस मैपिंग को यूज़ करूँगा यहाँ पे एनक्रिप्शन में, ठीक है? तो एनक्रिप्शन में कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे?
फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे साइफर टेक्स्ट एक वेरिएबल बनाया, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं साइफर टेक्स्ट में मैं दोनों प्लेन टेक्स्ट और वन टाइम पैड, ठीक है, वन टाइम पैड की, ठीक है, इन दोनों से मैं एक एक कैरेक्टर उठाऊंगा, ओके। जिप फंक्शन बेसिकली दो इटरेशंस को मतलब कंबाइन करता है, तो मैं जिप करूंगा तो मेरे को एक टपल मिलेगा, मतलब मैं मतलब यहाँ पे बेसिकली मैंने दो स्ट्रिंग्स दिए हैं, तो मेरे पास एक पेयर में वैल्यूज आएंगी, ओके। तो आई जो होगा मेरा प्लेन टेक्स्ट का कैरेक्टर होगा और जे जो होगा मेरा वन टाइम पैड का कैरेक्टर होगा, ओके। तो अब मैं साइफर टेक्स्ट में सिंपली जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ये, तो फिर अभी मैं यहाँ पे सिंपली उस कैरेक्टर का नंबर, उस कैरेक्टर का इंडेक्स उठा करके इन दोनों को ऐड करके 26 के साथ मॉड करके मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली मेरे साइफर टेक्स्ट के इंडेक्सेस मिल गए कि मेरे को कौन सा इंडेक्स उठाना है, राइट। अब क्योंकि मेरे को वापस इससे साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है, लाइक मैं नंबर्स नहीं ट्रांसमिट करना चाहता, मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, मैं उसको स्ट्रिंग वैल्यूज भेजना चाहता हूँ, ओके। तो स्ट्रिंग वैल्यूज भेजने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली उसको जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्ट करने के लिए जो चीज़ मैंने यहाँ पे डी में स्टोर करी है वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे एक और लेट से मैं एक और की बना लेता हूँ, एक और डिक्शनरी की, ओके। तो मैं के में जो स्टोर करूँगा मैं स्टोर ऐसे उल्टा करूँगा। तो जस्ट एक एग्जांपल है, तुम बहुत तरीकों से कर सकते हो, ASCII वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज सिंपलेस्ट तरीका, ठीक है। तो मैं साइफर टेक्स्ट जो मेरा स्ट्रिंग है मैं उसमें हर स्टेप के बाद अपेंड कर रहा हूँ वैल्यूज, राइट। तो हर हर बारी ये मतलब उसमें के में से वैल्यूज उठा उठा करके यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में अपेंड होती जाएंगी, ठीक है। किसी को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा, ये हर स्टेप पे साइफर टेक्स्ट बन रहा है, एक एक लेटर हर स्टेप पे अपेंड होता जा रहा है, तो फाइनली ये मेरा साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है, ओके। तो अगर मेरे को साइफर टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल मेरे को डिक्रिप्ट करना है, ओके, मैं यही ऑलमोस्ट सेम कोड में डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी किया, ओके। मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में सेम डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया और जस्ट मैं यहाँ पे चेंज क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस करूँगा बिकॉज मैंने पिछली बार की मैं एडिशन किया था, इस बारी मैं माइनस करूँगा, ओके। तो इस बारी अगर मैं रन करूँगा तो हाँ, ये इसने डिक्रिप्ट कर दिया, ओके। तो समझ आ गया ना ये अभी तक की वन टाइम पैड कैसे काम कर रहा है। किसी को कुछ पूछना, लाइक कोई भी लाइन कोड की जो समझ में भैया प्लीज शेयर द कोड। अच्छा, कोड एक्चुअली ये तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप पे थोड़ा और अच्छे से लिख करके मैं शेयर कर दूंगा, ओके। ऑल राइट। तो अभी ये चीज़ हुई वन टाइम पैड की, ओके। अब लेकिन वन टाइम पैड में क्या है कि हमारे पास की का साइज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। इतना बड़ा की साइज़ हम लेना नहीं चाह रहे। तो लेट से हम स्पाई बिट लेते हैं, ये हम जैसे वर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया, ओके। तो अब ये मेरी की बन गई है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी मैसेज है, ओके। तो अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज़ ये मे भी हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हो, बट उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस शुरू के इतने कैरेक्टर से मतलब है कि वो ऊपर वाले की लेंथ के इक्वल हो, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने रन किया तो
ये अभी मेरे पास इसने इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ करी है जो कि वन टाइम पैड में होती है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारी की रिपीट हुई है, ठीक है। तो मेरे को सामने वाले को बस इतना सा वर्ड शेयर करना, ओनली 6 कैरेक्टर्स, और मैं इससे बहुत बड़े बड़े मैसेजेस इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट विग्नेट साइफर, क्योंकि जैसा पहले मैंने बताया था कि वन टाइम पैड में एक ही की रीयूज होगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं ना कि ये 6 कैरेक्टर्स के साथ में वन टाइम पैड है, तो मतलब हर 6 कैरेक्टर्स के साथ में इंडिविजुअली वन टाइम पैड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है, इसके ऊपर क्रिप्टोनालिसिस अटैक करते हैं लंबे मैसेजेस पे। फॉर एग्जांपल ये बहुत छोटा मैसेज है, इसके ऊपर कोई भी इसको कैप्चर नहीं कर सकता कि की क्या थी, लेकिन अगर यही मैसेज अगर 1000 कैरेक्टर्स का होता तो हाँ डेफिनेटली उसके ऊपर कोई भी क्रिप्टोनालिसिस अटैक करके उसको मैसेज को डिराइव कर सकता था। ओके, तो और यहाँ पे इसको फिर शॉर्टन करने के लिए हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक्चुअली, एक जस्ट ट्रिक, मैथमेटिकल ट्रिक, आई क्योंकि मेरा इंडेक्स है तो मैं आई के साथ में की लेंथ के साथ मॉड ले सकता हूँ। तो की लेंथ के साथ अगर मैं मॉड लूँगा तो फिर सिंपली मेरे को की का वो इंडेक्स मिल जाएगा, लाइक मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं मॉड लगा रहा हूँ तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि की जो है मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी, ओके। और मैं यहाँ पे इजीली की को रिपीट कर सकता हूँ बिना उसके रिपीटिशन स्टोर करे हुए। जैसे मान लीजिए 1000 कैरेक्टर्स का प्लेन टेक्स्ट है, तो मैं की को 1000 टाइम्स टाइप करने से अच्छा मैं ऐसे उसको मॉड लेके यूज़ करूँगा, तो फिर मेरे को सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। तो जैसा आउटपुट ऊपर वाले में था, हाँ वही आउटपुट मेरे को इधर भी मिलेगा। तो अगर मैं एक और दूसरे टर्मिनल पे सेम चीज़ अगर मैं रन करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली सेम आउटपुट मिला जो पिछले वाला था जिसमें मैंने की को रिपीट किया था, ओके। तो ये विग्नेट साइफर का सबको क्लियर हो गया ना, लाइक मैं बेसिकली तुम्हें कोड करना बताना चाह रहा था कि कैसे क्लासिकल साइफर्स के साथ पाइथन में स्क्रिप्ट हैंडल करते हैं, ओके। तो किसी को भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो बता दो। अभी मीटिंग में है ना सब? हो सकता है किसी को पाइथन नहीं आती है तो दिक्कत आ रही हो, लेकिन पाइथन सीखना तो पड़ेगी। और बाद में तो मतलब रिकॉर्डिंग भी देखकर समझ सकते हो, पाइथन में कोड लिखना काफ़ी ज़रूरी है क्रिप्टोग्राफी में। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बताने के लिए यश गर्ग ने ये करा है। किसी को कोई भी डाउट हो समझ में, जिसको पाइथन आती हो उसको तो थोड़ा समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो। भैया ये इनुमरेट एंड जिप क्या होता है? अच्छा ओके, एन्यूमरेट क्या करता है बेसिकली, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। हाँ तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक इटरेबल है, ठीक है। पाइथन में इटरेबल्स होते हैं, ठीक है। इटरेबल्स कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि मैंने ये किया, फॉर एग्जांपल ये किया, ठीक है। एल एक इटरेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर फॉर आई इन समथिंग चल पाता है, ठीक है। एल कुछ भी हो सकता है, जैसे ये इटरेबल है, ठीक है, मैं इसके ऊपर इटरेट कर सकता हूँ लूप में, ठीक है। तो इन्यूमरेट क्या करता है, इन्यूमरेट कोई भी इटरेबल को आ, हाँ, तो बेसिकली क्या करता है इन्यूमरेट, कोई भी इटरेबल को एक टपल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एन्यूमरेट में जब भी हम ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर आई कॉमा जे इन एन्यूमरेट, तो ये उसको एक इटरेबल में कन्वर्ट करेगा।
उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी, टपल्स होंगे, ठीक है। टपल्स पता है ना पाइथन में? यस भैया पता है। हाँ, तो ठीक है, टपल्स बेसिकली इंडेक्सेस है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इन्यूमरेट का काम वही है कि ये हमें इंडेक्स भी दे देगा और वैल्यू भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आउटपुट करता है, फिर इसके ऊपर हम इटरेट कर पाते हैं। तो जैसे फॉर आई कॉमा जी इन प्लेन टेक्स्ट, तो इसके अंदर जब मैं ये यही सेम डेटा अगर मैं यहाँ पे अपने पास किसी वेरिएबल में डालता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने आई के अंदर जो है मेरा इंडेक्स स्टोर किया, ठीक है, और जे के अंदर इसने मेरा कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करी है, ठीक है, जो कि इस टपल से आइडिया ले सकते हो कि कैसे कैसे उसने वैल्यूज स्टोर करी है, राइट, समझ गए? यस आ गया। हाँ, जिप क्या करता है, जिप कोई भी दो इटरेबल्स को पैरेलल चलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ए कुछ लिया, ठीक है, बी मैंने कुछ लिया, ठीक है, अब मैंने जिप किया ए कॉमा बी, ठीक है। जिप के अंदर भी दोनों आर्ग्यूमेंट्स इटरेबल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसके ऊपर तुम इटरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने जिप में किया, तो जिप क्या करेगा, इंडिविजुअली स्प्लिट किया उसने दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है, 1 बाय 1, और वही चीज़ें मेरे को इसने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। ओके भैया, समझ आ गया ना? आ गया समझ में आ गया। और एक और चीज़ जिप में क्या है कि जो भी शॉर्टेस्ट इटरेबल है उसके ऊपर लेंथ डिफाइन होगी। जैसे ऊपर वाले में केवल 5 ही कैरेक्टर्स थे, नीचे वाले में यहाँ पे बी में मैंने रीअसाइन करके ज़्यादा कैरेक्टर दे दी, लेकिन वो 5 ही आएंगे क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स मतलब मिनिमम कैरेक्टर जिसमें थे वही आएंगे केवल, ठीक है। ओके भैया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, तो मैंने कोड वाला पार्ट इसलिए बताया था एक्चुअली तुम्हारे अभी हमने 2 प्रॉब्लम्स तुम्हें डाले थे, ठीक है। वैसे तो प्रॉब्लम्स ऑनलाइन टूल से भी सॉल्व हो सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि खुद से कोड करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल से कर ही सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। वैसे देख लेना, मतलब अभी प्रेजेंटेशन के लास्ट में तुम्हें प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे, तो उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो आ, ये चीज़ें क्लियर हो गई, लाइक कोड वाला पार्ट, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े? ठीक है, तो विग्नेट साइफर एक्चुअली इसमें क्रिप्टनालिसिस कैसे होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे तुम लोगों ने कोड देख लिया है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर 6 के बाद स्पाई बिट रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं हर 6th कैरेक्टर उठाऊँ तो मैं उसके ऊपर एक एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ कि हर 6th कैरेक्टर इनक्रिप्टेड है, बाकी सारे मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ एस, ठीक है, मतलब मेरे को क्या है कि जब मैं विग्नेट साइफर क्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं विग्नेट साइफर से, ठीक है, मुझे क्रैक करना है। अब मैं कैसे करूँ? तो पहली चीज़, मुझे ये नहीं पता कि की कितनी बड़ी है। की हो सकती है 6 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले मैं की पीरियड निकालूंगा कि कितनी टाइम के बाद पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले हम की लेंथ गेस करेंगे, ठीक है। की का हमने मान लिया कोई भी लेंथ कुछ n है, ठीक है, n की वैल्यू हम 1 2 3 4 सारे नंबर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, कोई भी एक पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है, उससे n इंटरवल्स पे सारी कीज उठाएंगे, ठीक है, मतलब सारी पोजीशंस पे कैरेक्टर्स उठाएंगे, फिर उसके ऊपर क्रिप्टनालिसिस अटैक करेंगे, क्योंकि वो हर पोजीशन जो है सेम कैरेक्टर से एनकोडेड है, अगर n उसकी की लेंथ है तो, ठीक है। और उसके ऊपर हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो बढ़िया, हमें की मिल गई। अगर हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो हम n की वैल्यू इंक्रीज करके फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा मे बी, बट धीरे धीरे चीज़ें जब क्लियर होंगी तो ये भी समझ आने लगा कि कैसे होता है, ओके। तो ऑल राइट, विग्नेयर में आई गेस सब क्लियर हो गया। तो ये कोई कोड वाला पार्ट मैंने समझा ही दिया, तो तुमको ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट अभी आगे ज़्यादा नहीं है अभी, ये कुछ स्लाइड्स हैं, ये बाद में, लाइक अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, कुछ ऐसे डिस्कस करने लायक नहीं, तुम लोग देख सकते हो बाद में, ठीक है।
ओके, ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्योरिटी एंड एफर्ट। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम सिक्योरिटी, हम ऐसे कुछ भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली एल्गोरिदम बना ले। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा एल्गोरिदम बनाया, हमें बहुत सुपर पावर के सुपर कंप्यूटर्स लग रहे हैं, हमें बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स लग रहे हैं, और हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, किसी का कोई बहुत मतलब चीप सी इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी एनक्रिप्शन टेक्निक्स हम नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि तुम्हें पता चला कि अटैकर को तुम मतलब नहीं, अटैकर नहीं, फॉर एग्जांपल तुमने इनक्रिप्शन किया बहुत एक्सपेंसिव और तुम्हारी इंफॉर्मेशन बहुत इनएक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे तुम्हारा मेजर कॉस्ट तो उसको सिक्योर रखने में चला गया, तो ऐसी इनक्रिप्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, और दूसरी चीज़, इनक्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि अटैकर को उससे ज़्यादा वैल्यू लग जाए। फॉर एग्जांपल कि ये मतलब सिक्योरिटी से जनरली ऐसे इतना लिंक नहीं है, बट एक एग्जांपल है, बिटकॉइन सबको पता है ना, बिटकॉइन किसको नहीं पता? ओके, तो बिटकॉइन सुना तो एक्चुअली, है भैया। हाँ हाँ, तो एक्चुअली ब्लॉकचेन्स के ऊपर ऑपरेट करता है, ठीक है। ये जब हैशेस के ऊपर हमारी एक वर्कशॉप होगी जिसमें हैशेस डिस्कस होंगे, उसमें बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कैसे हैशेस की वजह से बिटकॉइन चलता है। तो बेसिकली क्या है कि बिटकॉइन में ब्लॉकचेन जो है वो हैशेस के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो पिछले ब्लॉक का एक हैश फंक्शन पता है ना, इरिवर्सिबल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइंस में हर ट्रांजैक्शन का हैश जो होता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टोर होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल अब मतलब सारी नोड्स जो है एक दूसरे के साथ एक कंसेंसस एल्गोरिदम के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है कि सारी नोड्स के ऊपर, बिटकॉइन क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, तो सारी डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए एक कंसेंसस एल्गोरिदम होता है। तो कोई भी नोड के ऊपर कोई डेटा सर्टेन नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो ये एक एक्चुअली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि बिटकॉइन के अगेंस्ट में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, अगर वो उसकी कैपेसिटी से, लाइक बिटकॉइन के पास मान लो 49 कंप्यूटर्स हैं और बिटकॉइन के अगेंस्ट 51 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो वो बिटकॉइन को ईजिली टेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर बिटकॉइन की कैपेसिटी से थोड़ी सी भी ज़्यादा कंप्यूटेशन कैपेसिटी किसी और नेटवर्क के पास है, तो बिटकॉइन को ईजिली क्रैक कर सकता है। बिटकॉइन को मतलब पूरा सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आज तक जितनी हुई सबको रिवर्स कर सकता है वो। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि बिटकॉइन के पास अभी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर चाहे कि वो बिटकॉइन को क्रैक करे, ठीक है, तो उसको इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, और उसको मिलेगा क्या फाइनली, बिटकॉइन जिसकी वैल्यू जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि उसने बिटकॉइन क्रैक कर लिया होगा। तो टेक्निकली कोई ब्लॉकचेन को इसलिए क्रैक नहीं करेगा क्योंकि उसको कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाएगी और उसको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे अटैक्स भी कोई नहीं करता कि फॉर एग्जांपल उसके रिसोर्सेज बहुत लग जाए और उसको आउटपुट में भी कुछ ना मिले, ठीक है। ओके, तो हाँ, पहले मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, ओके, ये पेस्ट बिन के लिंक्स हैं। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना पूरी? यस भैया। यस भैया। हाँ, तो ये कुछ साइफर्स हैं, मतलब मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इनके बारे में, ठीक है। ऊपर वाले साइफर का तुम्हें गूगल फॉर्म पे यहाँ रिस्पॉन्स सबमिट करना है। ये सेकंड साइफर है, इसमें जो इसके अंदर साइफर का कंटेंट है उसके अंदर एक गूगल फॉर्म लिंक है, ओके। तो तुम्हें वो लिंक, कोई भी मतलब जो आज इनक्रिप्शन स्कीम डिस्कस करी उनमें से कोई एक इनक्रिप्शन स्कीम यहाँ पे लगेगी, ओके। तो ये डेटा तुम्हें मतलब यहाँ पे मतलब डिक्रिप्ट खुद से करना है, ओके। और ये गूगल फॉर्म्स पे तुम्हें सबमिशन करना है, ओके। इसके कोई ऐसे एज सच अभी हमने कोई स्कोर प्लान नहीं है, बट इट्स फॉर योर लर्निंग, ठीक है। तुम्हें चीज़ें कितनी क्लियर हुए हैं, ओके। और सॉल्यूशंस प्लीज़ शेयर मत करना आपस में, ठीक है, ओके। और स्टडी के लिए लाइक जो मैंने अभी बताया ये सब बस इंट्रोडक्टरी था। तो अभी cryptohack.org से मतलब इस यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें मिलेंगी। भैया सबमिशन की डेडलाइन कब तक है? डेडलाइन एज सच नहीं है, लाइक आई एक्सपेक्ट कि तुम 3 से 4 दिन के अंदर उससे पहले ही कर दो,
यहाँ पे क्रिप्टो हैक साइट पे तुम्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से आई गेस तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हें क्रिप्टो पैल्स पे मतलब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हमने कि क्या क्या अभी के लिए जो तुम लोगों ने सीखा है उससे क्या क्या कर सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, बट एक्चुअली गूगल करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को, बिकॉज एक जगह पे सब कुछ पढ़ा पाना इम्पॉसिबल होता है। ये ऑनलाइन कोर्स क्रिप्टोग्राफी 1 बाय डैन बोनी कोर्सेरा पे, इसका अभी के लिए मैं बोलूँगा वीक 1 कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, अगर ये कर सको तो कर लो, ठीक है। और बुक्स हैं अगर तुम्हें कुछ इन केस ऐसे बुक्स से पढ़ना हो, बुक्स अभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम कुछ एडवांस टॉपिक्स टच नहीं कर रहे हैं। बुक्स बाद में, फॉर एग्जांपल हम थोड़े एडवांस मैथमेटिकल कंसेप्ट पे जाते हैं तो तब मे बी बुक्स ज़्यादा काम आए। ओके, तो दैट वाज इट। ये लिंक्स अभी तुम्हें मतलब तुम्हें स्लाइड्स मिल जाएगी, तुम लिंक्स वगैरह सब कॉपी कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें जो भी और देखना हो। फाइनली कोई डाउट्स? लाइक ऑफिशियली अब ओवर है और कुछ नहीं है। भैया जितना आपने पढ़ाया ये मतलब इस साइट पे मिल जाएगा ऐसे पढ़ने से ऐसा?